अब हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज, कि जो लेंस होती है वो लेंस कैसे काम करती है। आपको याद है जब फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर हुआ था, फर्स्ट डे, आई थिंक हमारे सेकंड डे है या थर्ड डे है, थर्ड लेक्चर है, थर्ड है आज। थर्ड। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि कैमरा जो है वो हमेशा एक आंख से दिखता है, करेक्ट। हाँ नहीं एक सर, लेंस सेकंड होते कल हैं, बोला था। कल बोला था। ओके, तो देखिए कैमरा जो है हमेशा एक आंख से दिखता है, बिकॉज एक ही लेंस होती है हमारे पास। एक लेंस के थ्रू आपका जो भी व्यू है वो आपके कैमरा के अंदर रिकॉर्ड होने वाला है। तो अब ये जो लेंस है ना, ये लेंस काम कैसे करती है एग्जैक्टली, ये लेंस क्यों यूज हमको करना है, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं और कौन से टाइप की फोटोग्राफी के लिए कौन से लेंसेज यूज किए जाते हैं, वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। सो इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो लेंस जो होती है वो एक सेट ऑफ ग्लासेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लेंस में, अगर मैं आपको मोबाइल फोन के लेंस या कैमरा के लेंस बताता हूँ, तो ये जो लेंस है ना, इस लेंस के अंदर एक सिंगल ग्लास नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल ग्लासेस एक सर्टन अलाइनमेंट में उन्होंने फिट किए हैं, जो एक्चुअल में एक लेंस को फॉर्म करते हैं। तो हम लोग पहले वीडियो देखेंगे कि जहाँ पर एग्जैक्टली लेंसेज मैन्युफैक्चर्स कैसे होते हैं, उसके बाद में हमको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होगा कि हाउ दैट लेंस इज एक्चुअली फंक्शंस। ठीक है। These television lenses start with a very precise design. A diamond blade slices up a block of specially selected optical glass, while coolant prevents the blade from burning it. The slices then go under a diamond drill, which cuts several puck-sized discs from one glass slice. The operator is careful to keep waste to a minimum. Optical glass costs up to $1,000 per kilogram. During the drilling, the optical glass sits on a thinner piece of glass covered with wax. As the wax is melted, the discs are easily pulled away. Next, a device spins one of the discs while a wheel overhead sculpts it into a lens. The operator checks each lens for chips, and this one looks smooth. This tar-like substance is called pitch. The edges of the lenses have been built up with tape to contain the pitch. They completely coat the underside of the lens with it. Several pitch-covered lenses are now in a metal shell. A worker picks up a hot aluminum dome called a blocking body. He presses it onto the pitch-covered lenses, and the pitch melts onto it. Dousing it with water causes the pitch to harden, sealing the lenses to the blocking body. The blocking body is now upside down and acting as a holding device as it oscillates on a spinning grinding shell. The grinding makes the surface of the lenses uniform and smooth. They place a polisher on the lenses. It's lubricated with a very fine abrasive. For about an hour, the polisher oscillates while the block spins. Polishing makes the lenses smooth and transparent. It also gives them an even more curved profile. The lenses have been removed from the block, and it's time to cut the diameter down to size.
Using a microscope, a technician centers a lens between two brass chucks. A diamond blade at the back cuts the lens as the technician monitors it. He's making sure the diameter and axis of the lens have a common center. Next, they group some lenses on round racks called planets. Their universe is a vacuum chamber. The technician closes the door, and the planets continue their orbit. Inside this vacuum, an electron beam evaporates coating materials. The vapor rises to give the lenses a protective coat. A computer monitors the rate of evaporation and the coating. But there's much more to come. Up next, this process really gets visual as all the pieces of a camera lens come together. The lenses have just spent 3 hours getting a protective finish. It's time to wipe away any residue and make sure they're perfect. This particular lens is concave. She covers it to protect it while she cleans and inspects the lens with the opposite profile, convex. Then the convex lens goes to another technician who places it in a holding device. He looks into a microscope and adjusts the position of the lens until it's optically centered. He uses wax to keep the lens from shifting in the holding device. They give the lens another cleaning. Each one must be absolutely spotless before they proceed to the next step. Otherwise, dust particles could become trapped within the optical system and affect image quality. Now that the surface of the convex lens is immaculate, she dabs optical cement onto the center of it. She gives the other concave lens a little more scrutiny before she cements it onto the convex lens. She applies pressure to spread the cement between the two lenses. Cementing them together means they'll be less likely to shift around in the lens barrel. She checks for dust one more time. Then it's under the microscope for an optical alignment of this double lens. Because the cement isn't yet dry, he can push the top lens around and adjust its position. Next, they prep the barrel that will hold the lenses. The technician traces out lettering using a stylus, attached to a sharp tool that engraves information onto the lens barrel. It prints technical details that will tell the photographer just what the lens will do. Things like focal length, the f number, and the size of the aperture opening. These reference points allow the user to pull a picture into focus at the desired magnification. Now they double-check the design for this complex optical system and begin to pull all the pieces together. This singlet, or single lens, goes into the metal barrel first. Other lenses with various curvatures and dimensions follow. She places metal spacers between the lenses to separate them. Proper spacing will prevent aberrations in the image, such as blurring. Between installations, she covers the barrel with a piece of lint-free plastic because eliminating dust continues to be a necessity.
One fleck could ruin this entire assembly. Using tweezers, she coaxes the last lens into the barrel. She installs a retaining ring to hold the stack of lenses down. Then she locks it into place. There's one final inspection. She examines the assembled optical lens from all angles. It takes a total of 6 weeks to make one of these optical lenses. And in the end, it's picture perfect. बात को समझा एग्जैक्टली ये जो लेंसेज हम लोग देखते हैं जो मोबाइल फोन के लेंसेज हो गए या इसमें से टाइनी जो चीज होती है इसके अंदर एग्जैक्टली कैसे मैकेनिज्म जो वो फिट किया होता है तो ये हमने एक अभी देखा दैट इज द नॉर्मल लेंस जो हमारी होती है। अब हम लोग कैनन के लेंसेज एक बार देख लेते हैं कि कैसे वो लोग बनाते हैं। तो अगर अब डीएसएलआर कैमरा की मैं बात करता हूँ तो हमने कल पढ़ा था कि ये जो बटन होता है ये आपका लेंस रिलीज बटन है। ये मैं जैसे अगर निकालता हूँ ना तो अब ये जो आप रिंग दिखाई दे रहे हो ये जो रिंग है इसको बोलते हैं माउंट। इसको क्या बोलते हैं? माउंट। तो ये जो साइज है ना ये साइज हर कैमरा के लिए अलग अलग रहेगा, मतलब अलग अलग कंपनी ब्रांड। अगर कैनन का माउंट है तो कैनन का माउंट सेम रहेगा। कैनन में ये जो साइज है ये 2 साइजेस में आता है। एक जो है वो बोलते हैं ईएफ साइज, कैनन के जो कैमरा जिसको ईएफ लेंसेस बोला जाता है। और सेकंड एक टाइप है जिसको बोलते हैं आरएफ लेंसेस, आरएफ माउंट। तो अगर ये जो माउंट है ना ये माउंट और ये माउंट लेंस का माउंट दोनों मैच होने चाहिए तभी वो जो लेंस है इस पर्टिकुलर कैमरा बॉडी में फिट होगी। अब ये फिट होगी। अब ये ईएफ माउंट के लेंस है तो ईएफ माउंट के बॉडी पे वो फिट हो रही है। ईएफ माउंट के लेंस आरएफ माउंट के बॉडी पे फिट नहीं होगी। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब कैनन 2 टाइप के माउंट बनाता है। निकॉन जो है वो एक टाइप का माउंट बनाता है। देयर आर अनदर कंपनीज जो अलग अलग टाइप के माउंट्स बनाते हैं। तो इसके लिए अलग अलग टाइप के इसके लिए बनाते हैं क्योंकि सोनी हर कंपनी का जो माउंट का एक जो फॉर्मेट है वो पेटेंटेड होता है। करेक्ट। तो अब जैसे कैनन कंपनी है तो कैनन ने अपना पेटेंट अलग किया होगा, सोनी वो यूज नहीं कर सकती तो उनको तो अपना सेपरेट माउंट बनाना पड़ेगा ना। तो सोनी के जो लेंसेस है वो सेपरेट रहेगा। तो सोनी के लेंसेस कैनन को नहीं चलेंगे। सिंपल। अगर वहां पर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं एडाप्टर, जैसे हम लोग कैसे एक्सटेंशन लगा के काम करते हैं कई बार घर में, इंडियन जुगाड़, वैसे फोटोग्राफी में भी जुगाड़ होता है जिसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन एडाप्टर होता है जिससे आप आरएफ माउंट को ईएफ माउंट कन्वर्ट कर सकते हो। बट कई बार वो रिजल्ट आपको सही तरीके से नहीं देता, उसका अपना एक लिमिटेशन होता है। सो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं लेंसेज की तो लेंसेज के माउंट्स होते हैं। ये जो बैक साइड है ना यहाँ पर माउंट होता है। तो वो जो माउंट है वो उस बॉडी के साथ मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो वो लेंस उस पर्टिकुलर बॉडी को नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर।